इस एग्जाम्पल में हमें फंक्शंस डिफाइन करने हैं f प्लस जी एफ एक्स, f माइनस जी एफ एक्स, f g of x, f over g of x, where we have the functions f of x is equal to square root 4 minus x square and g of x is equal to square root x minus 1, where f of x is equal to square root of 4 minus x square and g of x is equal to square root of x minus 1. First, we are finding domains of f of x and g of x. Domain of the function f will be with close interval from -2 to 2, and domain of the function g is 1 up to infinity. Functions f plus g, f माइनस जी और एफ जी के लिए एक कॉमन डोमेन की ज़रूरत थी f और g फंक्शंस की डोमेन के f और g फंक्शंस की कॉमन डोमेन के लिए f फंक्शन की डोमेन और g फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन लेने से इंटरवल आया क्लोज्ड, जो कि है 1 अप टू 2. ये कॉमन डोमेन है f फंक्शंस की डोमेन और g फंक्शंस की डोमेन की. इस डोमेन की मदद से f प्लस जी फंक्शन, f माइनस जी फंक्शन, f g फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है. As we know that f plus g of x is equal to f of x plus g of x, it is equal to square root of 4 minus x square plus square root x minus 1. We put the values of the function f and g over here. The domain of this function will be the intersection of the domains of f and g functions. As f minus g of x is equal to f of x minus g of x, putting the values of functions f and g, we get square root 4 minus x square minus square root x minus 1. The domain of this function will be intersection of the domains of f function and g function. फंक्शन f और फंक्शन g की डोमेन के कॉमन पॉइंट्स इस फंक्शन की डोमेन में शामिल होंगे. As f g of x is equal to f of x into g of x, it is equal to square root 4 minus x square into square root x minus 1. We get this step by putting the values of function f and g over here. It is further equal to square root of 4 minus x square into x minus 1. The domain of this function will be the intersection of the domains of f function and g function. f और g functions की डोमेन के कॉमन पॉइंट्स इस फंक्शन की डोमेन में शामिल होंगे. As f over g of x is equal to f of x over g of x, and here it is important to discuss that g of x will not be equal to 0, as x is equal to 1 is not included into the domain of the function, because g of x will be equal to 0 and the quotient function become undefined at x is equal to 1. Therefore, the quotient function is defined on 1 with open interval and 2 with closed interval.